Go live start. Got it. Sir, are you there? Yes, Dr. Gangwar. I'm here. Yeah. Yeah, so good afternoon, everybody. And we are going to have our second session of the day. And we have with us, sir, am I audible? Yes, you are. Okay. So we are going to have our second session of the day, and the topic is ensuring the continuity. And we have with us Dr. Astos Acharya, Assistant Professor, Sai LNCP, a very young and energetic teaching faculty of Sai LNCP. Ladies and gentlemen, sir will be delivering the topic ensuring continuity, and that is a little bit related to sports psychology, as sir is expert in sports psychology. So let me introduce sir before we start the session. Participants, sir has done bachelor and master degree in physical education, PhD in the area of sports psychology. He is alumnus of one of the eminent college in physical education and sports, LNCP Trivandrum. He has doctorate degree from LNIP Gwalior. He has distinction of holding first rank in MP as well as in BP from University of Kerala, Trivandrum. Sir has received the Junior Research Fellowship and Senior Research Fellowship awarded by UGC for higher studies. He has published more than 10 research articles in Journal of National and International Repute. He was confirmed with Atusi Fujita Scholarship for his research contribution as a young researcher in the 6th ASPAS Sports Psychology Conference held in Taiwan. Sir is lifetime member of Sports Psychology Association of India, and sir has contribution in many curriculum development committees made for physical education and sports. So, ladies and gentlemen, without further much time, I would like to invite our speaker for the session, and on behalf of Ministry of Education, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Sai, and the entire team of LNCP, on behalf of our principal, Dr. G. Kishore sir, I, Dr. Narendra Gangwar, would like to take this privilege to welcome Dr. Astos Acharya for the session. Sir, we are happy and privileged to have you in the session. I also welcome all the participants in the second session. Sir, over to you, please. Thank you so much, Dr. Narendra Gangwar, for these beautiful and kind words. And I deem it as my proud privilege to be here with you all as a speaker. So basically, as Dr. Narendra Gangwar has said, today's discussion will be more towards sports psychology. So before we proceed further, let me share my screen with you all. Just a moment. Is it visible, Dr. Gangwar? Yes, sir. Good to go, please. Okay. So today's topic, we are going to discuss about ensuring continuity in sports. So the reason why the title has been given, the justification behind this kind of title is ensuring continuity in sports. Because so far till today, many before me, many of the eminent speakers have come and delivered lectures regarding how we'll be identifying the talents. We also have discussed like what are the different scientific principles of sports training, or various scientific aspects of sports, like your biomechanics, like your GTMT, like physiology. Every almost all area have been covered. But then, as most of you might be knowing, that in sports or in physical education and sports, the
yes, it is important that we need to train well so that we can achieve our target, we can achieve our goal in a stipulated time. But I mean, further important is how to remain. I mean, achieving the success is important, but more important is how long we can remain there as a champion or as a successful athlete. So that is the reason why this particular session, today's session, we will be discussing about different psychological aspects, like how we can use, sports psychology, different theories or different principles of sports psychology to help or support our athletes to remain in their peak performance for a longer period of times. So, I mean, before we proceed further in today's session, so let me just tell you a few things like why is sports psychology so important for all of us. So, competitors, they are continuously under immense physical and emotional stress. They are under different kind of pressure. Sometimes they feel the pressure of coaches or their teammates, and the pressure they put. Sometimes they also put pressure on themselves. So this kind of chronic stress can distract an athlete, or can cause an athlete, distractions, which may hamper his or her physical performance or sports performance. And when such kind of issues are left untreated, जब हम उस तरह का कुछ issues होते हैं जिसको हम treat नहीं करते हैं, और या तो उसको ignore कर जाते हैं, तो आगे चल के क्या होता है कि वो हमारा कुछ मेंटल इश्यूज और फिजिकल इश्यूज, आगे चल के कुछ मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज क्रिएट करते हैं, सो दैट आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है, जो जो खेल मनोविज्ञान जो है, it benefits the whole person by encompassing both psychology and psychological and physical performance. अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में हम कुछ आइडिया रखते हैं या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो हमें एक जो प्लेयर है उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो फिजिकल एस्पेक्ट जो है, उसका जो ट्रेनिंग वगैरह जो है, फॉर ऑल दोस फिजिकल एस्पेक्ट, वी हैव गॉट स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनर्स, वी हैव गॉट trainers, we have got coaches, so all those things. But for psychological aspect, for the mental aspect, which is generally, I have found, I mean, many of the times this is actually neglected. तो इस जो नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट जो है, ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, इसको हम किस तरह का थोड़ा अगर इसको अच्छे से जाने, अच्छे से इसके बारे में कुछ नॉलेज गेन करें, तो हाउ वी कैन ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन. सो द आउटलाइंस ऑफ द सेशन, जैसे कि मैंने बोला था आपको, आज का जो सेशन है, द सेशन विल प्राइमरीली फोकस एंड इंक्लूड द डिलीवरेशंस ऑन द फॉलोइंग. ये जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, ये 6 पॉइंट के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा. पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट इज देयर डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स ऑन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन. सेकंड जो है, दैट विल बी रोल ऑफ मोटिवेशन, का रोल क्या है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में. थर्ड वन जो है वो रहेगा कि गोल सेटिंग का इम्प्लीकेशन स्पोर्ट्स में क्या है, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग बोलते हैं कि आपका जो गोल है ना, एकदम बहुत अच्छा गोल सेट करना चाहिए, जो प्लेयर्स हैं हमारा, उनका जो गोल सेटिंग बहुत हाई होना चाहिए, बट ये कैसा करना चाहिए और इसका जो प्रिंसिपल्स क्या है, और हाउ टू असिस्ट एन एथलीट इन सेटिंग हिज और हर गोल, ये सब चीज के बारे में जनरली हम बात नहीं करते हैं. तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड हाउ टू मेंटेन अटेंशनल फोकस एंड कंसंट्रेशन इन स्पोर्ट्स. ये ज्यादातर एथलीट्स, इवन आई हैव सीन इन हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मेंस में भी कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना अटेंशन या कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनको अपने मेडल से हाथ धोना पड़ता है. तो एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, ये अच्छा है कि एक एथलीट को एग्रेसिव होना चाहिए या उसको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, इस चीज के ऊपर भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. एंड फाइनली वी विल आल्सो कम टू नो, विल आल्सो डिस्कस वेरियस एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इन स्पोर्ट्स. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. So coming in the list, first thing that we are going to discuss here is developmental perspectives on sports and physical activity, right? So growth and development जो है, ये दोनों चीज जो है, as a physical education teacher we must have knowledge about both growth and development. So ये growth and development, these are two different things. हालांकि बहुत
most frequently this growth and development, these two terms are very closely used, interchangeably used. So कुछ लोग इसको मानते हैं कि growth और development में कोई ऐसा significant difference नहीं है, growth जो है development भी वही है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि growth की जगह development की जगह पे growth use करते हैं, but growth and development के बीच में there is a difference. ओके, सो ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, या जो कि हमारे जैसे कि हाइट में बढ़ना, वेट में बढ़ना, गर्थ में बढ़ना, दैट इज योर quantitative aspect of your development, that is called as your growth. But all the qualitative aspect of growth is called as your development. So I'm not just going to teach you, tell you the definition of growth and development, but rather we will discuss like why do we need to, we means whenever I'm going to refer that to say that we physical education teachers or we physical education professionals. So एक फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल होने के नाते क्यों हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज क्यों होना चाहिए, that we are going to discuss. So that I'll be explaining you in the following 6 points. The first one is to gain a better understanding of one's own life experiences. This can help people personally reach an understanding of what childhood events shaped their adulthood. सी बहुत बार आप लोग भी ऐसे फेस किए होंगे कि देयर विल बी दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट issues are becoming so widespread, so prevalent that you can see that in different schools and colleges, or especially like among the adolescents. So any problem during the growth and developmental stages or in early developmental stages definitely will result into a bigger psychological issue when that child grows in the later stages. So to gain a better understanding of your students' life experiences, of your students, what he has gone through during his old days, or maybe what he has gone through during his earlier days, so that also will give you an understanding about his or her personality. And the second one is to gain knowledge of how social context impacts development. See, if you remember the theories of personality, so the personality, of course, the definition of personality says that the personality ka matlab kya hai? It is the uniqueness of an individual which makes him different from any other individual around him, is called as personality. But अगर हम किसी एक बंदे के, किसी एक स्टूडेंट का अगर हम होल या ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड पर्सनालिटी के बारे में हम जानना चाहते हैं, हम उसका जो 2 एस्पेक्ट है ना, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है. वन थिंग इज हेरिडिटी एंड सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट. क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी है, दैट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ योर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. वन इज नेचर, दैट इज योर हेरिडिटी, एंड नर्चर, दैट इज योर एनवायरनमेंट. राइट, तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज गेन करना फ्रॉम ए सोशल और एन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू also will give you an idea to understand the growth and development of an individual in a much efficient or in a much better manner. This knowledge can be invaluable for professionals like physical education teachers as they gain a deeper understanding of their students. So अगर आप एक स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट के पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, उसका बस हम स्कूल में उस बच्चे को देखते हैं कि वो बच्चा नहीं आता है खेलने के लिए, वो बच्चा मतलब पूरे ग्रुप से बाहर रहता है, सेक्लूडेड रहता है, मतलब आइसोलेटेड करके रखता है खुद को. तो हम ये बोलने, ये जो बंदा है, तब हम ये बोलते हैं कि ये जो लड़का है या ये जो स्टूडेंट है इज वेरी इंट्रोवर्ट. बट ये गलत है. हम कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है उसको देख के हम उसका पर्सनैलिटी को पूरा वैसे ब्रांड नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि क्यों एक बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसका एज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसका जेंडर क्या है, उसका मतलब जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि जो घर में उसका सिचुएशंस क्या है. So all those issues, when we try to understand and bring them together, that will give us a better understanding about that individual's personality. To help others understand and contextualize the ups and downs of life, this helps therapists and psychologists better aid their clients in self-discovery. And the next point is to understand how societal change can support growth.
and to become a more effective teacher to support the physical and mental health of individuals. I'm just quickly, brushing through all these points because, we have, lot many things to learn in this, stipulated time that has been given to me. So, but you just see all these points. If there is any point where you want me to explain or you want me to go details, you can ask me in the Q&A question and answer section. I will definitely respond to it. So these are nothing but the graphical representation, like what are the top reasons why we study human growth and development. There may be many numerous reasons why we study growth and development, because for the biologist point of view, why do they study growth and development is different from a scientist point of view, from a physical education teachers point of view, why we study growth and human growth and development is different. So what I have written here is from a teacher's point of view. Let it be any kind of teacher, mathematics, biology, physical education teacher. So these are basically 5 different reasons why we should be studying, हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए growth and development के बारे में. First one is gain an understanding of your own life experience, जो मैंने इससे पहले आपको explain किया है. Help others understand what they are going through. Understanding the relationship between society and individual growth, lead more effectively, support the physical and mental health of others. And here the key components of Erickson's model of human growth and development. See, the whole stages of growth and development is divided into different kind of different stages. That is stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the stage 1 is infancy. Stage 2 is toddlerhood. Stage 3 is preschool years, early school years, adolescence, young childhood, middle adulthood, and late adulthood. And after that, beyond this comes the old age. Okay, so these are various stages of growth and development as per Erickson's model of human development. This is the kind of stages, the kind of the differentiation of various stages of growth and development that is displayed on your screen is based on Erickson's model of human development. But if you refer different books, different authors, you will find different kind of classifications are there. But by and large, the characteristics of each and every stage of growth and development remains the same, even though by different authors, the name of the stages are differently mentioned. So here there are growth stages. There are prenatal, infancy, early childhood, then comes the middle childhood, then late childhood. उसके बाद आता है middle to late adolescence. तो ये again this is also given by another psychologist. तो इसके बारे में इन डिटेल में अगेन आपको नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम जितने भी सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं यहाँ पे, जितने जो लोग ये अटेंड कर रहे हैं, definitely I'm sure during their training days, during their courses, they might have gone through it. So I'm not going to explain in detail like what is prenatal, infancy, early childhood, middle childhood, late childhood, and adolescence. But yes, I can just give you a brief idea from this slide. You can get a brief idea about the characteristics of each and every stages of growth and development. So these are few recommendations to the practitioners that why you should understand the general physical growth patterns that children go through, so that they remain aware of where each child is in the biological growth and development process. तो ये बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, इनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो जितने भी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस मैंने बताया है कि इट इज मैंडेटरी दैट जितने भी बच्चे हैं सब ये स्टेजेस होके ही जाएंगे. दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. ऐसा नहीं कि स्टेज 1 हो गया उसके बाद स्टेज 2 नहीं जाके सीधा स्टेज 3 में पहुंच गया, ऐसा कभी नहीं होगा. बट ये पक्का होगा कि आफ्टर गोइंग थ्रू द स्टेज 1, दैट इज इन्फेंसी, देन द चाइल्डहुड, देन कम्स द एडोलेसेंस. So during all these stages of growth and development, the growth and developmental rate will be different. In one stage, the growth and developmental rate जो है वो थोड़ा slow रहेगा. In very next stage, the growth and development rate जो है, the rate of growth and development जो है वो अपना थोड़ा fast रहेगा. तो इसी के हिसाब से हमें आज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर हमें जानना चाहिए कि एक जो स्टूडेंट है वो कौन सा स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जा रहा है, स्टेज में अभी है, उसका करंट एनाटॉमिकल एज क्या है, और उसी के हिसाब से हम जो हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज है उसको प्लान करना चाहिए. एंड
The next thing is the use caution in cutting children from competitive sports programs, as those who are cut may tend to be the later maturers in their chronological age group. Therefore, if possible, youth sports programs should provide opportunities for all children to participate, perhaps with late maturers placed at more developmentally best levels. इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि ये जनरली स्कूल में होता है, कॉलेजेस में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि जो बच्चा इंटरेस्टेड है खेलने के लिए वो अपने स्पोर्ट्स टीचर या फिजिकल एजुकेशन टीचर के पास आते हैं या पी डायरेक्टर के पास आते हैं, एंड हम उन्हीं बच्चों को लेके हम लोग टीम बनाते हैं। बट इन स्कूल में क्या होता है, जहाँ की अगर 100 बच्चे हैं तो सारे 100 के 100 जितने बच्चे हैं वो सारे खेलना चाहते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है जितने भी बच्चे हैं बाय बॉर्न वो बच्चों का ये नेचर है कि हर वक्त हम खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, किकिंग, जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, ये हमारा जो पर्सनालिटी का एक पार्ट है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये हर वक्त दे हैव लॉट ऑफ काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ सरप्लस एनर्जी, जिसको कि वो स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बट उस टाइम पे क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, अगर वो उसमें से बोलेंगे कि नहीं मुझे सारे बच्चों पे एट ए टाइम फोकस करना पॉसिबल नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे कॉलेज का जो फुटबॉल टीम है उसके लिए मुझे 20 बच्चे अलग करना है, उनके लिए सेपरेट ट्रेनिंग देना है। ये करने से क्या होगा कि ये जो स्कूल टाइम है, यानी कि जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उस टाइम पे आप लोगों को जो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको स्पेशलाइजिंग एन इंडिविजुअल इनटू ए गेम और स्पोर्ट्स, ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। रादर इनको फोकस करना चाहिए मल्टीलैटरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मल्टीलैटरल काइंड ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जिस टाइम पे कि हमें मोर अपॉर्चुनिटीज पैदा करना है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आके खेल सकें, क्योंकि आगे चल के दिस अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे चल के जाके दिस विल प्रोवाइड यू ए पूल ऑफ टैलेंट्स, जिससे कि आप आगे चल के आप टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then discourage the practice of specialization in only one sport or physical activity until the mid-adolescent years. Mid-adolescent years का मतलब ये है कि हमारा अराउंड बाय द एज ऑफ 16, 17, 15, 16 का एज तक जब हमारा बच्चा या हमारा स्टूडेंट जब तक 15, 16 एज ग्रुप तक नहीं पहुंच जाए, उसको कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज नहीं कराना चाहिए या अवॉइड कराना चाहिए, क्योंकि वी डू नॉट नो, क्योंकि हमारा आगे चल के वो बंदा, वो जो प्लेयर है या वो जो स्टूडेंट है, वो आगे चल के कौन सा गेम या कौन सा स्पोर्ट्स में वो अच्छा कर सकता है, वो हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि उसका जो कंप्लीट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलप पोटेंशियल है, डेवलपमेंटल पोटेंशियल है, वो अभी तक कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है। तो वी शुड गिव देम सम टाइम बिफोर वी स्पेशलाइज और वी डायरेक्ट हिम टू पार्टिसिपेट इन ए पर्टिकुलर गेम एंड स्पोर्ट्स। Okay, so first thing we discussed about growth and developmental aspects of sports, growth and different stages of growth and development. Why do we study growth and development, and the various takeaway points also we discussed. Now moving further, हम लोग इस पे बात करना चाहेंगे कि मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, मोटिवेशन क्या है स्पोर्ट्स में, राइट? सो ये जो मोटिवेशन है, अगर मैं किसी को भी पूछूंगा कि मोटिवेशन क्या है, तो डेफिनेटली सब लोग खुशी खुशी बता देंगे कि मोटिवेशन इज नथिंग बट इट इज ए ड्राइविंग फोर्स व्हिच पुश और पुल अस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। तो ये जो मोटिवेशनल प्रोसेस है, इसको मोटिवेशन को समझने के लिए ना वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये जो मोटिवेशनल प्रोसेस को समझना चाहिए। जो वहां पे है नीड, वहां पे ड्राइव, एक्शन, इंसेंटिव, देन रिवॉर्ड। तो ये जो चीज है नीड, ड्राइव एंड एक्शन, ये जो तीन चीजें। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन द डायग्राम व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन, which says, the first one says need or necessity or lack of food. Now for an example, you just imagine that you are feeling hungry, right? When you are feeling hungry, the only motivation in front of you is to search for food, eat, and so that your hunger is actually satisfied. So now what happens, why do we feel hungry? Whenever the blood glucose level in our body goes down, so our brain gets a message and we get a kind of feeling. So that feeling is called as hunger. The hunger, why this hunger is happening? Because our body needs food so that the blood glucose level can be brought back to normal. वापस blood glucose level को हम वापस normal level पे ला सकें, and हमारा जो body का जो functioning है सारा अच्छे से चलता रहे.
So the lack of food, हमारे body में जब lack of food होता है, that gives a necessity for food. So that indicates our brain to search for food. Hunger moves the person to obtain food. We try different sources. We go to hotel. We start cooking. We go buy some food. So this is what is your drive. And action is looking for food or cooking for the food. Then incentive, after you got the food, you got the source. What you do is you eat it. That is the incentive. And after eating, the hunger disappears and your hunger is satisfied. Okay, now shift your attention to the diagram presented on the right side of your screen from a sports point of view. Now, what is the need? What is the necessity? Why an individual is participating in a sports, in any kind of games and sports? So there are the need is to need to complete complete the written reports within 1 week. Then fear of failure, worry that time is not enough, doubts to finish the project. I mean, these two different diagrams are the examples of the motivational process. So there are different kind of intrinsic motivation, there are different kind of extrinsic motivation. So if you अगर आप कोई book में पढ़ेंगे तो आपको जो different types of motivation है वो आपको generally मिलेगा कि intrinsic motivation है और एक extrinsic motivation है. तो intrinsic motivation जो है उसको again I mean in this particular diagram I have displayed different kind of motivation that is called as intrinsic motivation, then four different types of extrinsic motivation, and ultimately एकदम नीचे जो दिया हुआ है कि ये motivation. अभी मैं ये चीज आपको मैं थोड़ा in detail explain करूंगा क्योंकि you will not find this in many of the books. तो ये intrinsic motivation का meaning क्या है कि when the reason of motivation is deep within you. जैसे कि अगर सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, किसी एक को भी आप पूछेंगे कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए रेगुलर क्यों आते हैं, आप मतलब व्हाट इज द रीजन दैट एवरी मॉर्निंग यू कम फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो उनका आंसर ये आएगा कि बाय कमिंग सुबह जो मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए आने से ही मुझे आई ड्रॉ काइंड ऑफ डिफरेंट सेटिस्फेक्शन और प्लेजर बाय कमिंग फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग. तो उनको ये जो पार्टिसिपेट करने आते हैं या जो एवरीडे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, they are not going to get any kind of medals, they are not going to get any kind of trophies, but the only reason why they show up every morning or they come for walking every morning, the reason is by doing so they get a kind of self satisfaction. So and that is the reason why they are doing or indulging themselves in a kind of activity. So जब कोई भी एक्टिविटी करने का रीजन आप खुद के अंदर हो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है जब कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वे हमारा कोई भी बिहेवियर का रीजन जब हमारे बॉडी के आउटसाइड हो या हमारे कंट्रोल के आउटसाइड हो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. नाउ फॉर एन एग्जांपल, नाउ if I go ask an athlete that what is the reason you are working very hard, you are every day you are training 3 sessions, आप एक दिन में 3 सेशन करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है, आप क्यों इतना वर्कआउट करते हैं? तो वो मुझे बोलेंगे शायद कि मुझे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीतना है, मुझे वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है. तो द रीजन व्हाई a particular sportsman is doing a particular sports or training every day lies outside his control. जैसे कि there is an outside force which is compelling an individual to behave in a particular way, like in this case for an example is the gold medal in world championship. Okay, so the intrinsic motivation is clear, extrinsic motivation is clear. Now there is another kind of motivation which is a motivation. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप ट्रेनिंग कराते हैं या जब मतलब स्कूल में डिफरेंट काइंड ऑफ पी या फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज कराते हैं या मास ट्रेनिंग कराते हैं, उस टाइम पे देखना कि कुछ बच्चे जो है ना वो रेगुलर एब्सेंट रहते हैं, वो रेगुलर मतलब वहां से भागते हैं, वो regularly they don't have any kind of motivation and any reason for motivation to participate in physical activity. Neither they are motivated to participate neither they are motivated to participate in a very
intrinsic way or in extrinsic way, and there is no reason why they should be participating in different kind of sports. So this is your intrinsic motivation, extrinsic motivation, and a motivation. Under extrinsic motivation, there are again 4 different types. They are integrated regulation, identified regulation, introjected regulation, and external regulation. And how do we motivate our students? This is, I mean, there are many ways and means. There can be thousands of ways and means how to motivate an individual to participate in different, kind of games and sports. But when we combine all these things together, so these are the 5, important points, important guidelines, which I have brought it here, that how we should motivate our students to participate in different games and sports. The first one is, consider both situation and traits in motivating people. Analyze and respond to both personal and situational characteristics. Motivations may change over time. You should continue to monitor people's motives for participation even months after they have begun. इसका मतलब ये है कि आज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, आप जो है आपका जो भी स्टूडेंट है उसके बारे में सारा कुछ जानना, ऑल द पॉसिबल थिंग्स जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज क्योंकि इन द प्रीवियस स्लाइड्स, इन द प्रीवियस सेक्शन जहां हम बात कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तब मैंने आपको ये चीज भी बताया था कि अगर आपको एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको उसका बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि सिचुएशन एंड नेचर, ये दोनों के बारे में आपको बात करना पड़ेगा. तो अगर यहाँ पे अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको सीधा एकदम इमीडिएटली मेडिसिन नहीं दे देगा. डॉक्टर पहले क्या बोलेगा कि फर्स्ट यू डू ऑल दिस टेस्ट, आप टेस्ट करके रिपोर्ट लेके आओगे. रिपोर्ट आने के बाद वो डॉक्टर रिपोर्ट देखेंगे. रिपोर्ट देखने के बाद ओनली आपका जो प्रॉब्लम क्या है आपके शरीर में, आपका क्या बीमारी हुआ है उसको थोड़ा आइडिया मिलेगा. देन ओनली ही और शी विल गिव यू मेडिसिन. तो सेम थिंग, या अगर आप किसी बच्चे को मोटिवेट कराना चाहते हैं तो तभी आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो जो लड़का है उसका जो रीजन ऑफ मोटिवेशन क्या है, मतलब वो क्यों इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में खेलना चाहता है. क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे आते हैं कि बस उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, गेम खेल रहे हैं, महीने का इतना पैसा मिल रहा है, बस चल रहा है. बट गेम के मतलब दे हैव नो कंसर्न टुवर्ड्स इंप्रूविंग देयर ओन गेम्स एंड गेम एबिलिटीज, गेम और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसर्न. बस उनको पैसा मिल रहा है इसलिए वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो तभी आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो जो बंदा है ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आपका ट्रेनिंग और वेरी मच इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स दैट ही और शी इज प्लेइंग, दैट्स व्हाई ही इज कमिंग रेगुलरली. नो, डोंट बी इन सच काइंड ऑफ illusion. Rather, what you should do is you should thoroughly consider both situation and the personality factor in motivating people. First, you should know your athlete. You should know details about your athlete. Then only you can motivate him. Second guideline is to understand people's multiple motives for involvement. Now, observe the participant and see what they like and do not like about the activity. Gather information about the person's motives for participation. Periodically check their reasons for participation. Now, again, another tricky part is an individual's reason why he or she is participating in a particular game and sports keeps on changing. आज अगर मेरा प्रायोरिटी है कि मुझे एक मेडल जीतना है, ठीक है, मैं गया, एक मेडल जीत गया, मुझे गोल्ड मेडल भी मिल गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया. देन व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? मुझे तो जो मिलना था मुझे तो मिल गया. उसके बाद क्या है कि am I really motivated to participate, to continue training to achieve something higher? तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले उसका दोनों सिचुएशन, ट्रेट एंड सिचुएशन, ये दोनों को पढ़ना चाहिए. सेकंड गाइडलाइन ये है कि उनका जो मल्टीपल मोटिव्स क्या है फॉर इन्वॉल्वमेंट इन पर्टिकुलर गेम एंड स्पोर्ट्स, वो पढ़ना चाहिए. एंड द थर्ड गाइडलाइन इज चेंज द एनवायरनमेंट टू एनहांस मोटिवेशन. Then influence, guideline 4 is try to influence the motivation. And the fifth guideline is use behavior modification to change undesirable participant motives. So these are the 5 guidelines by and large which you can use to build motivate your students to participate in different games and sports. Now this is here comes the goal setting. Okay, goal setting by and large, it is actually a process
through which we try to help our athletes to set their goals. सी अगर मुझे कोई पूछेगा कि गोल सेटिंग क्या है और इसका जरूरत क्या है, हम इसको हमारे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में या पर्टिकुलरली कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में गोल सेटिंग की क्या जरूरत है? हमें हम तो जब भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोच के पास जाते हैं, ट्रेनर के पास जाते हैं या कोई भी सर के पास जाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि बेटा ऐसा करना है, ये हमें इतना परफॉर्मेंस देना है, ऐसे ट्रेनिंग करना है और इसको इतने दिन के अंदर अंदर हमें ये अचीव करना है। सी दिस बेसिकली ये जो इतना टाइम के अंदर अचीव करना है, ये लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करना है और ऐसे ट्रेनिंग करना है, ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट योर नथिंग बट a part of your goal setting process. So goal setting by and large is a process through which systematically you establish a goal for yourself. आपके लिए गोल की जरूरत क्या है? जैसे कि एक बहुत अच्छा मूवी है, एलिस इन वंडरलैंड ऐसे करके कोई एक मूवी है। उस मूवी में क्या है कि एक एक ऐसा सीन है कि एक there is a junction. At that junction, there is 4 roads in all these 4 different directions. So one cat is sitting there. So the Alice just reaches there. वहां पहुंचने के बाद वो उस बिल्ली को पूछती है कि ये जो रास्ता कहाँ जाती है? तो देन बिल्ली इसको वापस पूछती है, द कैट आस्क बैक दैट वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो देन एलिस वापस रिप्लाई देता है कि आई डोंट नो वेयर आई वांट टू गो, बट ये रास्ता कहाँ जाता है? तो देन द कैट रिप्लाइज, when you do not know where you want to go, it hardly matters where this road goes, you can choose any of the road. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम विदाउट एनी गोल या हमारा कोई गोल या ऑब्जेक्टिव या पर्टिकुलर कोई एक टारगेट ना रख के अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, सो देन इन दैट केस दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। तो इसीलिए गोल सेटिंग का जरूरत है, कोई गोल एस्टेब्लिश करने का जरूरत है, इसीलिए जरूरत है बिकॉज because many of the times what happens, we normally get distracted or we may get disturbed by different factors, different environmental factors, different situational factors. Sometimes it may be an injury or something. So with all these distractions, within all these distractions, the goal setting is a process which will influence the performance by directing athletes' attention towards relevant tasks and increasing persistence in the face of obstacles. So then again, there are different types of goals. One is process goal, the other one is performance goal, and the third one is outcome goal. So we will just try to understand, because one of the sessions in the previous sessions wherein I was acting as a moderator. So one expert was taking the class. If I am not wrong, Dr. Rakesh Yadav was taking the class. So in that class, he has already explained these 3 different goals together, like process, performance, and outcome. So I'll not go in details. I'll just brush through it. So the process goal means they focus on learning the skills and techniques necessary to accomplish a particular goal. Now, for an example, if I'm a discus thrower, so to throw the discus to a good distance, I need to be very good. I need to have very good, strength. I need to have a very good movement speed. I should be good in the the whole rotational technique. So when I am trying to master over this rotational technique, my conditioning, my fitness, my maximum strength, then explosive strength, speed, so all these are called as process goals. Why these are called as process goals? Because these are the small things or small portion of my technique or of my sports, which is going to help me to achieve my the ultimate goal. So the basic difference between the performance goal and outcome goal. So I will give you 2 examples. The first example is, I am a discus thrower. Throughout the year I am training very hard. सब कुछ सही चल रहा है, वेट ट्रेनिंग भी बढ़िया चल रहा है, स्किल ट्रेनिंग भी बढ़िया चल रहा है, मेरा टेक्निक भी एकदम परफेक्ट है। बट मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस बार गोल्ड मेडल जीतना है, इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप मुझे गोल्ड मेडल जीतना है इन डिस्कस थ्रो. दिस इज वन एग्जाम्पल. Second example is, same discus throw, same training, everything is good, but दूसरे साइड में मेरा गोल क्या है कि मैं चाहे कोई भी मेडल जीतूं या ना जीतूं, बट मेरा जो है मेरा परफॉर्मेंस, डिस्कस थ्रो का परफॉर्मेंस मेरा आना चाहिए 63 मीटर्स. तो देखिए ये दोनों सिचुएशन में थ्रोवर भी सेम है,
उसका कंडीशन भी सेम है, कंपटीशन भी सेम है, बट द काइंड ऑफ गोल दैट ही हैज फिक्स्ड फॉर हिमसेल्फ, इन वन साइड there is a performance, he wants to throw 63 meters, and at the other side there is another goal which is at the goal, winning a gold medal. So when you are focusing on the outcome or the result of an event, which is like for an example winning a gold medal or bronze medal or a championship or winning a trophy, those kind of goals are called as your outcome goals or result oriented goals. But wherein you are focusing on achieving a particular standard or achieving a particular performance, so those kind of goals are called as your performance goals. Like for an example, when you fix up a target to achieve a performance of 63 meters in discus throw. So we have three different goals: process goal, performance goal, and outcome goals. And one more thing, if you ask, अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये तीनों गोल में से कौन सा गोल सबसे अच्छा है, so I will not be in a position to explain you कि इन तीनों गोल में से कौन सा गोल सबसे अच्छा है, but I will tell you rather कि ये तीनों गोल्स सारे अच्छे हैं, but as a coach और एज ए ट्रेनर ये आपको समझना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा गोल यूज करना है, और ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है कि कौन से टाइम पे कौन से गोल को यूज करके हमें बेस्ट रिजल्ट लाना है. ठीक है, we'll move to the next slide. Outcome, desired end result, performance, setting the standards, process, strategy, and techniques. So there are three different types of goals: outcome goals, process goals, and performance goals. Okay, so now we will study different principles of goal setting. So there are 11 principles of goal setting. So again, the set specific goals means this means like whenever आप जब भी हेल्प करते हैं अपने एथलीट को गोल सेटिंग में, तो आपको एकदम स्पेसिफिक गोल सेट करना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे कि लाइक सीजन के बिगिनिंग में जब आप अपने प्लेयर के साथ बात कर रहे हैं, अपने टीम के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको खड़े करके आप अगर ऐसे बोलते हैं कि सीधा कि बॉयज एंड गर्ल्स, दिस ईयर वी नीड टू प्ले बेटर देन वी हैव प्लेड लास्ट ईयर. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जो हम प्ले किए थे, लेट्स से कि आउट ऑफ 10 चैंपियनशिप वी हैव वon only 5. So this year 6 is also better, 9 is also better, 10 is also better. तो हमें जो रेट ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी कि रेट ऑफ जो परसेंटेज ऑफ विनिंग जो है, उसको हमें क्या फिक्स करना है. अगर इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट this year we are going to play better than the last year, if you say that कि this year we are going to win, let us try to win like 80% of the games that we are going to play, this makes sense because this becomes more specific and more pinpointed and objective. And the second principle says set moderately difficult but realistic goals. Now ये हालांकि उसको प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग में उसको सेकंड में रखा गया है, बट गिवन ए चांस, अगर मुझे कोई चांस देगा या मुझे पूछा जाएगा, तो मैं ये जो प्रिंसिपल है सेट मॉडरेटली डिफिकल्ट बट रियलिस्टिक गोल्स, इसको मैं सबसे पहले रखूंगा. क्योंकि द रीजन इज, मैंने बहुत बार देखा है कि जो गोल सेटिंग करते हैं, यानी कि जो स्पेशली ये स्कूल में होता है, इसमें मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को कोई ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि इन बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे होता है कि जैसे फिजिकल एजुकेशन, स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल्स, की जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का जॉब जो है दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द नंबर ऑफ मेडल्स और द नंबर ऑफ चैंपियनशिप आई मीन दे विन. ये हकीकत है. ये कुछ स्कूल्स में ऐसे होता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि वो मतलब somehow they push or the pull the students और उनको ट्रेनिंग कराते हैं so that कुछ मेडल जीत जाएं, और this thing continues and this becomes a vicious cycle. तो इसमें क्या करना चाहिए, आप जब गोल सेट करते हैं अपने एथलीट को, पहला तो आप याद रखिएगा ये जो गोल है ये आपका गोल नहीं है, ये आपका प्लेयर का, ये या तो आपका स्टूडेंट का या एथलीट का गोल है. तो इसीलिए आप ऐसा गोल भी नहीं सेट करना चाहिए जो कि उसके लिए बहुत आसान हो. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बंदा नेशनल मेडल जीत चुका है फुटबॉल में, या नेशनल मेडल जीत चुका है बैडमिंटन में, उसको आप अगर बोलोगे कि अगले 3 महीने में हमें डिस्ट्रिक्ट में चैंपियनशिप जीतना है, वो तो उसके लिए बड़ा आसान है. तो अगर आप उस टाइप का गोल सेट करेंगे जो कि उसके लिए बहुत आसान है, तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगा आगे चल के, फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई चैलेंज नहीं रहेगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो देन उसको छोड़ के भाग जाएगा, ही विल नो मोर पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स.
बट एट द अदर साइड अगेन, अगर आप उसके लिए एकदम टफ गोल रखोगे, या तो कोई अगर नेशनल मेडलिस्ट इन बैडमिंटन है तो उसको बोले कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हमें ओलंपिक्स खेलना है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसीलिए जब आप गोल सेट कर रहे हैं अपने एथलीट के लिए, तो मेक श्योर कि जो भी गोल आप सेट करते हैं, इट शुड नॉट बी वेरी इजी दैट ही लूज इंटरेस्ट, और इट शुड नॉट बी वेरी टफ दैट इवन इफ ही गिव्स हिज ऑल आउट, ही इज नॉट गोइंग टू अचीव इट। तो इसीलिए आप जो गोल सेट करते हैं, दैट शुड बी चैलेंजिंग, yet at the same time it should be achievable. So that is the reason why I said, इसलिए मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है, ये जो गाइडलाइन है, इसको हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। That set long and short term goals. Long term goal can be your Olympic goal, can be your world championship goal, can be your like all India Inter-University goal, and short term goals can be like small with championship, with small achievements which is going to help you achieve the bigger or the ultimate result. Next guideline is set print performance and process as well as outcome goals. तो ये मैंने जब प्रीवियस स्लाइड में when I was explaining you all the 3 different types of goals, तब मैंने बोला था कि कोई भी गोल इसमें से बेहतर नहीं है। अगर आप मुझे कोई बोलोगे कि कोई एक गोल बताइए जो कि बेस्ट है, तो मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा। ये सारे गोल का यूजेस हैं, सारे गोल का यूजेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग में है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोच और द ट्रेनर हाउ टू मेक यूज ऑफ इट। सेट प्रैक्टिस एंड कंपटीशन गोल्स, क्योंकि प्रैक्टिस में एक एथलीट का परफॉर्मेंस एंड कंपटीशन में उसी सेम एथलीट का परफॉर्मेंस इज ऑलवेज डिफरेंट। सो एज ए ट्रेनर आई वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मेरा एथलीट जो प्रैक्टिस में जो परफॉर्मेंस देता है, उससे जो कंपटीशन परफॉर्मेंस जो होगा उससे थोड़ा कम होगा। कंपटीशन परफॉर्मेंस प्रैक्टिस परफॉर्मेंस से थोड़ा कम होगा, बिकॉज प्रैक्टिस सिचुएशन जो है, प्रैक्टिस परफॉर्मेंस जब वो डिलीवर करता है, उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट है, दैट इज फैमिलियर एनवायरनमेंट, और दैट एनवायरनमेंट इज बाय एंड लार्ज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ट्रेनर और द एथलीट। तो इसीलिए कंपटीशन में जब जाते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, और इसीलिए देयर विल बी ए डिफरेंस बिटवीन योर कंपटीशन एंड प्रैक्टिस गोल्स। सो रिकॉर्ड गोल सिस्टमेटिकली, आप जो भी गोल से आपका आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, सिस्टमेटिकली आप उसको रिकॉर्ड करते जाइए, उसको लिखिए, उसको नोट डाउन कीजिए। सो डेवलप गोल अचीवमेंट स्ट्रैटेजीज। काफी बार ऐसा होता है कि हम गोल तो बना लेते हैं, हमें क्या अचीव करना है बना लेते हैं, बट कैसे अचीव करना है, हाउ डू वी अचीव दैट गोल, दैट वी डू नॉट डिसाइड। तो इसीलिए ये गलती नहीं करना चाहिए। आप जो भी गोल टारगेट करते हैं, गोल फिक्स करते हैं, उसको, उस गोल को या टारगेट को कैसे अचीव करना है, उसके बारे में भी आपको स्ट्रेटेजी या गेम प्लान बनाने जरूरी है। कंसिडर द पार्टिसिपेंट्स पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, then foster individuals goal commitment, provide goal support, provide evaluation of and feedback about goals. So all these things will definitely help you how to set an effective goal. So these are, these days, these smart goal setting principles are very has become very famous. I mean, this is nothing but S stands for specific and measurable, A action oriented, are realistic, timely, and self-determined goals. This smart, I mean, this is nothing but just a an explanation of these smart goals. Okay, next thing that we are going to study about is concentration. So concentration is the ability to maintain focus on relevant environmental cues. When the environment changes rapidly, attentional focus must also change rapidly. Thinking of the past or the future raises irrelevant cues that often lead to performance error. बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे इवेंट कोचेस आते हैं हम लोगों के पास ये बोल के कि मेरा जो एथलीट है वो कंपटीशन के टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो कंसंट्रेशन के क्यों नहीं कर पाता है, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे सही करना है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है ये कंसंट्रेशन क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए, अभी अभी अगर जो मैं अभी अगर आपको क्लास से, मतलब ये ऑनलाइन मोड में मैं आपको, वी आर हैविंग ए डिस्कशन, आई एम जस्ट टेकिंग ए सेशन, आई एम सेइंग सो मेनी थिंग्स, बट द थिंग इज एट द सेम टाइम my voice is not the only thing that you are hearing. There may be many things happening around which is making a sound. There may be somebody is shouting in the nearby, maybe the birds are making noise, maybe the fan is moving, maybe there is an AC which is on, a music is being played. But
Even if you are hearing all these things, you are listening to my voice. There is a difference between hearing and listening. Hearing means any sound which is reaching to your, I mean, you are able to hear. But listening means, when we are talking about listening, you are paying attention to. So that means there may be so many cues available, at the same time, but the cue to which you attend to, that actually matters. तो इसीलिए आप जब गेम खेलते हैं, आपका जो फोकस है वो पूरा गेम के ऊपर होना चाहिए। तो जब गेम सिचुएशन चेंज होता है, उसी के हिसाब से आपका जो फोकस यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो भी चेंज होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर अटेंशनल फोकस और कंसंट्रेशन। तो ये अटेंशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? बहुत सारे अटेंशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसका जो इंटरनल डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटरनल डिस्ट्रैक्टर कुछ 6 पॉइंट्स लिखे हैं और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स 2 पॉइंट लिखे हैं। सो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स जो भी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, द काइंड ऑफ नॉइज द ऑडियंस इज मेकिंग। ऑडियंस से कोई अगर कुछ बोल रहा है, यानी कि द नंबर ऑफ ऑडियंस प्रेजेंट इन द स्टेडियम, इसके ऊपर कोई भी एथलीट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्टर्स जो है कि अटेंडिंग टू पास्ट इवेंट, ओके, attending to past events, attending to future events, choking under pressure, over analyzing body mechanics, fatigue and inadequate motivation. So attending to past events and attending to future events, ये जो दोनों चीज है, ये बेसिकली आई मीन बहुत सारे इंटरनल डिस्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, बट अगर उसको हम क्लासिफाई करना चाहेंगे, वो बेसिकली 2 चीज के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, अटेंडिंग टू पास्ट इवेंट्स एंड अटेंडिंग टू फ्यूचर इवेंट्स। तो व्हेन आई एम सेइंग दैट कि अटेंडिंग टू पास्ट इवेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो पुराना इवेंट्स हमारे साथ हो गया है इन पास्ट। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर लाइक लास्ट ईयर when I was the last year when I was trying to when I was trying to do a long jump, or let's say when I was trying to do a triple jump, so that time something happened and I badly fell down, and I got a very bad ankle twist, for which I had to take rest for around 3 to 4 months. Now again, after that injury, whenever I come out and I go to participate, before every time I attempt for a jump, what I am thinking is I am always thinking about that injury. So I am trying to attend to the past events. This is one scenario which may cause a distraction to my concentration or my focus in the particular kind of game and sports that I'm playing right now. And attending to future events, what happens many times, I have also felt, I would say that I have also, this same situation also happened with me, wherein before even winning a match, I have already, started thinking that, I have already won the match, मैं already match जीत चुका हूँ, मुझे ऐसे गोल्ड मेडल मिल रहा है, मतलब लोग ऐसे मुझे प्रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसे एक्कोलेट मिलेगा, इतना अच्छा जॉब मिल जाएगा, इतना अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये सारी चीज जो है कि ये अभी तक हुआ नहीं, दिस इज अ फ्यूचर इवेंट। अगर इसके बारे में मैं सोचने लगूंगा तो क्या होगा कि द मोमेंट व्हेन आई गो अटेम्प्ट फॉर अ थ्रो, इट विल डेफिनेटली आई विल डू सम मिस्टेक, एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द करंट सिचुएशन और ऑन द इवेंट, आई स्टार्टेड शिफ्टिंग माय फोकस और अटेंशन इन द पास्ट इवेंट और इन द फ्यूचर इवेंट्स। सो anyway, whether you are attending in the past or attending to the future, anyway इन दोनों में से कोई कुछ भी आप करिए, this will definitely affect your performance. And similarly, choking under pressure, over analyzing body mechanics, fatigue, inadequate motivation, all these things will create attentional problems. So how do we actually there are different techniques, there are different methods for enhancing concentration, like on-field techniques, use of simulation practice, use of different cue words, use non-judgmental thinking, establish routines, then develop competition plan, develop eye control, monitor yourself, overlearn the skills. So these are the techniques. There may be many different techniques which can be used by to enhance your concentration by using different kind of machines, by using different, but why I have not mentioned it here, because all those machines are very costly. But if you make use of this, use of simulation practice, use of keywords, use of non-judgmental thinking, see, all these things doesn't require any financial involvement.
It only needs you need to be taught all these different kind of techniques. You just need to practice it, have to gain mastery over it, so that you can use all these words and during the competition. So I'll just give you a small example of trying to focus, trying to concentrate. There are two different kind of breathing techniques. One is your chest breathing, second one is your abdominal breathing. So when we are tensed, we are under stress, we are not able to focus, we are not able to concentrate, then what happens? Our breathing, becomes very, shallow. So what happens? Instead of breathing from the abdomen, we try breathing from the chest. Right? If you focus on an athlete, you will see that his chest is coming up and down, very frequently. So that gives you, and that should give you an indication that your athlete, आपका जो athlete है, वो he is going through stress. तो उसका solution क्या है, क्या करना चाहिए? उसका solution ये है, you have to immediately shift your focus. आपको breathing के ऊपर focus करना चाहिए. Instead of breathing from the chest, आपको पूरा फुल ब्रीथ लेना चाहिए अंदर, सो दैट योर डायफ्राम यानी कि पेट का जो भाग है, यानी कि जो पोर्शन है, दैट शुड बल्ज फॉरवर्ड. सो यू शुड टेक ए डीप ब्रीथ and try to focus on the breathing and relax. Okay, so use of simulation practice. The meaning of simulation practice is many times what you should, आपको क्या करना चाहिए कि अगर पहला चीज तो यह है कि आपको पता करना चाहिए कि पता करना पड़ेगा कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके एथलीट को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, नॉइज बाय द ऑडियंस. आपका अगर एथलीट को आप मतलब ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपको ये पता चला है कि आपका जो एथलीट है वो ही और शी इज स्केयर्ड ऑफ द नॉइज मेड बाय द ऑडियंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू क्रिएट ए ट्रेनिंग सिचुएशन और ए कंपटीशन लाइक सिचुएशन वेल इन एडवांस. क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम तभी होता है जब हम कोई नोन एनवायरनमेंट या नोन सिनेरियो से कोई एक अननोन सिनेरियो में जाते हैं. कोई अगर जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर इंटरमुरल में हम जितना एफर्ट या जितना इजीली पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वही सेम कंपटीशन या तो सेम काइंड ऑफ गेम कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में जाके या दूसरा कॉलेज या स्कूल में जाके अगर हम पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो देन डेफिनेटली वी फील लिटिल कंसर्न एंड वी फील लिटिल डिस्कम्फर्ट. ये रीजन क्या है? इसीलिए है कि जब हमारा सिनारियो में या यानी कि एनवायरनमेंट, प्लेइंग या ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में चेंज होता है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इफ बाय एनी मीन्स, अगर कोई भी जरिया ढूंढ के अगर हम उन लोगों को एक्चुअल गेम लाइक सिचुएशन से रूबरू करा सकें या उनसे मतलब थोड़ा उस टाइप का कोई एक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट पैदा कर सकें बिफोर योर एक्चुअल कंपटीशन, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प देम इन ए ग्रेट वे एंड मे प्रिवेंट योर एथलीट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. aggression एक ऐसा एक टर्म है which I will say that it is more misunderstood than understood. इसीलिए अगर मैं आपको पूछूंगा कि अगर आपके अंडर कोई बॉक्सर ट्रेनिंग के लिए आता है, कोई वेट लिफ्टर आता है, कोई थ्रोवर आपके अंडर ट्रेनिंग के लिए आता है, या कोई रेसलर आपके अंडर ट्रेनिंग के लिए आता है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे, उस किस टाइप का एथलीट होना चाहिए? Definitely, I'm 100% sure most of you would say that, sir, I mean, he or she should be aggressive. उनको थोड़ा aggressive होना चाहिए. No, aggressive नहीं होना चाहिए. Aggressive कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि aggressive होने से being aggressive or this aggression is a different or a negative kind of emotions. And you try to understand one thing, कोई भी negative kind of emotion अगर हमारे अंदर है, तो यानी कि that is going to affect our sports performance and that is definitely going to bring down our sports performance. तो इसीलिए पहले हम समझते हैं कि एग्रेशन का मतलब क्या है. एग्रेशन का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी बिहेवियर या कोई भी एक्शन करते हैं जिसका इंटेंशन है, ओनली इंटेंशन है कि किसी सामने वाले को हानि पहुंचाना, किसी को इंजरी पहुंचाना, या किसी को कोई प्रकार का कोई भी टाइप का हानि पहुंचाना, उस तरह का जो बिहेवियर है हम उसको बोलते हैं एग्रेशन. ओके, तो एग्रेशन जो है, अगेन ये डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रेशन, दो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रेशन है, हॉस्टाइल एग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. ये हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको अगर दो एग्जांपल देता हूँ. हॉस्टाइल एग्रेशन, आप अगर कोई मतलब फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच में मैं पहले हॉस्टाइल एग्रेशन का एग्जांपल देता हूँ, देन थिंग्स विल बी क्लियर. हॉस्टाइल एग्रेशन इसको बोलते हैं, अगर आप कोई फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, जैसे कि आप गोल पोस्ट के सामने आपको बॉल मिल गया,
बॉल मिल जाने के बाद मैं आपका अपोनेंट टीम में हूँ, अगर मैं बॉल टैकल नहीं किया तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर ए गोल बिकॉज यू आर द बेस्ट, आप आपके टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर मैं ये बॉल बॉल टैकल नहीं किया, आप पक्का गोल स्कोर कर देंगे। तो मैं जब बॉल टैकल करने के लिए आपके तरफ गया, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू टैकल द बॉल, मैं जब बॉल टैकल करने का कोशिश कर रहा था, बाय मिस्टेक मेरे से गलती से मैं बॉल से लगने के बजाय आपके सिनबोन पे या नी पे या एंकल पे लग गया और आप बहुत बुरी तरह से गिर गए और आप स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, ये था एक्चुअल सिनेरियो। बट आपको क्या लगा कि मैंने जानबूझ के मैं बॉल को टैकल नहीं किया, मैं जानबूझ के जाके आपके पैर पे मारा और आपको गिराया, जो कि आपको इंजरी लगा और आप बहुत मतलब बहुत इट वाज वेरी पेनफुल फॉर यू। तो आप क्या करेंगे, आप तभी डिसाइड कर लिया कोई गोल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उसका उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे पैर पे लात मार दिया या मेरे ये एंकल पे लात मार दिया, नी पे लात मार दिया, मुझे उसका पैर तोड़ना है। आप अभी आपका जो जितना भी गेम था, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका जो मेन फोकस था गेम का, वो था कि आपको मैच जीतना है, अच्छे से खेलना है, अच्छा गोल स्कोर करना है। बट अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद आपका गेम क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मुझे उस सामने के बंदा जो है जिसने मुझे टैकल करके गिराया, मुझे उसके पैर तोड़ना है, मुझे उसको इंजरी करना है, मुझे भी उसको उतना पेन पहुंचाना है जितना उसने मुझे पहुंचाया। तो इस टाइप का जो एग्रेशन है, इसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। बट इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आप जैसे कि वही सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल आई गिव। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर कोई क्रिकेट टीम के कप्तान है, यू आर द कैप्टन ऑफ योर क्रिकेट टीम, ठीक है, एंड आई एम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ योर ओपोनेंट। आपके जो ओपोनेंट टीम है, मैं उस ओपोनेंट टीम का बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ। अगर मैं आउट हो गया, यानी कि पूरा जो टीम है वो विद इन नो टाइम आउट हो गया और मैं वहां पे कुछ देर तक खेल गया, तो अच्छा स्कोर करूंगा और हमारा टीम जीत जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने आपका जो सबसे अच्छा बॉलर है उसको बुलाया पास में, उसको बोले कि इसको, ये जो सामने जो बैट्समैन खड़ा हुआ है, उसको एक अच्छा बाउंसर लगा, सो दैट यू नो इट, टारगेट करो उसका चेस्ट एरिया, टारगेट करो, अच्छे से बॉल फेंको सो दैट उसके सर पे या चेस्ट पे लग जाए एंड वो रिटायर्ड हर्ट हो जाए। अगर अगर वो रिटायर्ड आउट हो जाएगा तो देन हम लोग मैच जीत जाएंगे। तो आपका जो बॉलर है वो आता है, एक फास्ट बॉल डालता है, बाउंसर आता है, मेरे सर पे लगता है एंड आई एम रिटायर्ड हर्ट, मैं बाहर चला गया और आप टीम जीत गए। देखिए, ये हॉस्टाइल एग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में एक बेसिक, एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है? फुटबॉल सिनेरियो में आपने क्या किया, गेम कुछ भी हो जाए, मुझे उस जो सामने जो बंदा मुझे जिसने टैकल किया था उसका पैर तोड़ना है। अभी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या हो गया, कि मुझे इस बंदे को इंजर्ड करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे ये अगर इंजर्ड नहीं होगा तो हम मैच नहीं जीत पाएंगे, इसको इंजर करके हमें मैच जीतना है। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपको मैच जीतना है बाय कॉजिंग हार्म टू समवन। बट होस्टाइल एग्रेशन में क्या है, आपको मैच जीतना है, मैच हारना है, उससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाला जो है उसको आपको इंजरी यानी कि कुछ टाइप का हार्म करना है। तो दिस हॉस्टाइल एग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ये दोनों गलत है। एंड ऑल दी आई मीन नथिंग, आई मीन नन ऑफ दिस टू शुड बी प्रमोटेड और शुड बी यू नो टॉलरेटेड। ओके, सो एजर्टिव बिहेवियर अदर क्या है, ये आपको फोकस करना चाहिए। सारे कोचेस ट्रेनर को इस पे फोकस करना चाहिए कि एजर्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। लेजिटिमेट फोर्स यानी कि रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रह के, उसको सारे जो अच्छे से उसको रूल रेगुलेशन को जान के उसके अंदर रह कि हम कितना एफर्ट दे सकते हैं, कैसे मैच जीत सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। सो द टाइप्स ऑफ एग्रेशन में होस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन दोनों सही नहीं है एंड वी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव बिहेवियर। तो ये एग्रेशन कैसे कंट्रोल करना है, हाउ टू कंट्रोल एग्रेशन, हमें आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग एग्रेशन। You have to promote assertiveness, not aggressiveness among your athletes. As I told you, आपको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि आपको अग्रेसिव होना चाहिए, एज ए थ्रोअर आपको अग्रेसिव होना चाहिए, एज ए वेट लिफ्टर आपको अग्रेसिव होना चाहिए, नहीं, उनको assertive होना चाहिए। दे शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे शुड फोकस ऑन देयर गेम, दे शुड वर्क ऑन इम्प्रूविंग देयर ओन एबिलिटी। Athletes involved in aggressive act should be severely punished because that is the way only आप ऐसा करके क्लियर मैसेज बाहर भेजेंगे कि कोई भी एग्रेसिव वे में बिहेव करेगा, he or she will definitely get the punishment.
Coach promoting the aggressive act should not be spared either. Official aggression should be prevented. Coping skills to deal with the aggression should be practiced. So, what are the different psychological skills to be used for controlling aggression? That also has to be practiced. Then anxiety management, there are different anxiety management technique. There are, state anxieties. I mean, there are different kind of, trait anxieties. This I will just skip. Yeah, there are different anxiety reduction technique. There is progressive muscle relaxation. There is breathing control, which I told you, that abdomen breathing and chest breathing. There is a biofeedback. There is autogenic training, hypnosis, stress management training. All these different training techniques, if anyone out of these 6 techniques, either there is any technique on which you want me to explain, you can put a Q&A, then I'll respond to it. But in detailed explanation of this, I'm not going to it, because you just remember, this PMR, breathing control, biofeedback, autogenic training, stress management training and hypnosis, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको यूज करके हम एंजाइटी रिड्यूस कर सकते हैं. So just to summarize, for continuity in sports for an athlete, the coach must do the following. एक कोच होने के नाते, एक ट्रेनर या एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें एथलीट को मोटिवेट करना चाहिए. किस तरह का मोटिवेट करना है? there were 5 detailed guidelines about motivating an athlete. उसके बारे में मैंने आपको बताया है in the previous slides. Then do the right goal settings. You understand which kind of goal, किस तरह का गोल का यूज किस टाइम पे है, आप कौन से टाइप के गोल को आपको प्रमोट करना चाहिए. Help athletes concentrate better, try to control the aggression and make him or her feel comfortable and let him enjoy the game. Okay, so that's all from my side for this session to all of you, and thank you so much. Now the session is open for discussion. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Thank you, Dr. Narendra. Yeah, thank you so much, sir, for very informative and wonderful session. And with your permission, shall we take few questions from the participant? Yeah, please. Yeah, thank you. So, participants, before we start taking questions, I would like to request all the participants, please not to write question in chat box. If it is possible, please write the question in question answer section. And if you have any query, anything to discuss with our expert, please write in the question answer section. Thank you. Sir, one question is from Anita Singh. Yes, please. Yeah. The goal is essential to achieve aim. सुनाई नहीं दिया, दोबारा, can you repeat? Goal is essential to achieve goal, aim. Am I audible? Yeah, you are audible. Sir, the participant Anita Singh wants to know the goal is essential to achieve aim. Yeah, see, I think there is a basic confusion between goal, aims, and objectives. See, first we need to understand, what is the difference between goal, aims, and objectives. Of course, goal is essential to achieve a particular, like when I started explaining regarding goal setting, that time I told you like why a goal is important. A goal is important, a goal will prevent us from all the different kind of distractions throughout our journey towards our attainment of our ultimate objective. Now, for an example, if my ultimate objective is to represent my country and win a medal for my country, if that is my ultimate objective, then the distraction can be the distractions for me can be my career like decisions, my academics, my parental pressure, if my parents are not willing me to participate in games and sports. So all these things are going to be distractions. But when you have fixed up a goal, when you have fixed up an objective in life, then goal setting or deciding it in a very scientific way or in a methodical way will definitely help you out in achieving all those targets. Yeah, thank you so much, sir. The next question is from participant Santosh Babu. Sir, please explain biofeedback technique. Okay, see, biofeedback technique, like just imagine, let us try to understand the word biofeedback.
So the bio means body related feedback, means the kind of like informations that we receive. See, in biofeedback machine, what happens, a different kind of electrodes are attached to different parts of your body, and by the help of a software, we try to understand whether your muscles are relaxed, your muscles are tense, because when you are going through anxiety, or when you are under a lot of stress or arousal, then what happens, our muscles also try that time our muscles also radiate or give different kind of informations. So we try to read the informations from the muscle by means of different electrodes connected to different parts of the body, and whether your muscle is relaxed or tensed, we can see it, or we can say by seeing that on a computer screen. Yeah, thank you, sir. The next question is from Manoj Kumar Singh. The question is, sir, please explain aggressive behavior. Yeah, aggressive behavior, like as I told you, the moment word aggressive comes into, the moment you hear the word aggressive, you should understand one thing, that the prime intention is to harm someone. Now, for an example, the football example that I have given. Now, for let's assume that Dr. Narendra Gangwar is a football player. Suppose he is trying to tackle. I mean, he is trying to score a goal, and I am his opponent. I am trying to. So my target will be always to tackle the ball and somehow somehow prevent the goal from being scored. So मैं जब ये tackle कर रहा हूँ, ball को जब tackle कर रहा हूँ, so instead of hitting the ball, if I have by mistake hit his leg and he falls down, so what he believes that this man intentionally kicked on my leg. Now at this point, what happens? He will no more try to win the game, win the match, score the goal or anything. Now he become revengeful. He is trying to reciprocate the similar kind of pain and injury that I have caused him. But of course, from my side, it was unintentional. But from my side, from his side, it is going to be intentional. So aggressive behavior is nothing but any kind of behavior of yours which is intended to cause harm or damage to someone. Yeah, thank you so much, sir. Now the next question is from Farhan Bahid. What is the difference between stress and anxiety? Oh, what is the difference between stress and anxiety? Okay, so stress, yeah, this is stress. Results between when there is a difference between your situational demand and your ability, that results in stress. Now, for an example, if you are very fit, you are very lean and thin. If I ask you to run for 25 kilometers, then there is absolutely no problem. But if you are hefty of 120 kg body weight, if I ask you to run for 20 kilometers, then and if I say that if you do not run for 20 kilometers, you are going to lose your job. No. So this itself is going to put you under stress. That means that whenever there is an imbalance, there is an imbalance between your demand and your ability. So that results into a stress. But at the same time, when we are talking about anxiety, so anxiety, it's a very different kind of feeling, different kind of emotions, which is always attached with different heightened level of body arousal and apprehensions, and it is also related to the lack of self confidence and self esteem. Yeah, thank you, sir. So the next question is from Ravikant Ranjan. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या एग्रेशन इसलिए भी जरूरी है कि अपोनेंट पे दबाव बनाया जा सके? See, that is what I always told you. See, opponent पे दबाव तभी बनेगा अगर आप aggressive करके aggressive behavior करके आप opponent पे दबाव बनाना चाहते हैं, तो ये दबाव आप तभी बना पाएंगे only when जैसे कि आपके साइड में एक aggressive है, aggressive player, आप दो player को बोलेंगे aggressive खेलने के लिए, but if that also fails, then it will backfire. ये आपके ऊपर backfire कर जाएगा. मान लीजिए कि आपने किसी एक को बोला कि अगर उनका जो बेस्ट प्लेयर है उन पे पैर पे एक लात मार दो कि just so that we can win, but after that if that happens to be your best player और आपको भी रेड कार्ड मिलेगा, तो आपका जो प्लेयर है ना, your team has to play with 10 versus 11, so definitely you are going to be at loss.
तो जो एग्रेसिव बिहेवियर के थ्रू जो ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर बनाना, दैट इज जस्ट अ मिथ। दैट इज, वो एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जब पहले क्रिकेट मैच होता था, तो दे ट्राइड दिस ट्रिक, बट नाउ दिस ट्रिक डजंट वर्क एनीमोर विद इंडियन टीम। तो वहां से अगर 2 प्लेयर एग्रेसिव होते हैं, तो यहाँ से 4 प्लेयर एग्रेसिव होते हैं। So this aggressive behavior when you are trying to project, or when you are trying to exhibit, that ultimately results, unnecessarily wastage of energy and effort. That should be prevented. So you should rather focus on your own game, how you can channelize and materialize your own efforts by remaining in your rules and regulations. That you should do. Yeah, thank you, sir. Now the next question is from Syed Muhammad Gulam Raja. How to tackle aggressive team players? Okay, how to tackle aggressive team players? Because one thing I believe, that if you as a coach, if you are not aggressive, if you are not promoting the aggressive behavior, then what happens, your players will not be aggressive. Even if they are aggressive, they will try to learn how to be calm, how to be cool and relaxed. Because if you see, there is a movie, Coach Carter. I mean, it's a very famous movie, very little old movie. But in that, what happens, why I am taking the name of that movie, because that if you watch that movie, your things will be much clearer, your concept will be clearer. Because a player may be aggressive, but as a coach or as a trainer, when you support that, there you do a mistake. आप वहीं पे गलती करते हैं, आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आपको डिसाइड करना, क्योंकि यू आर टेकिंग केयर ऑफ ए टीम। आप अगर एक बंदे को आप, इफ यू आर लेटिंग हिम गो, और इफ यू आर टॉलरेटिंग और एक्सेप्टिंग हिज एग्रेसिव बिहेवियर, देन व्हाट इफ दैट एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द टीम विल क्रिएट एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द टीम, देन यू आर फिनिश्ड। तो अगर एक बंदा, कोई ऐसे एग्रेसिव प्लेयर आते हैं, तो उसको प्रमोट करने के बजाय आप, यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट with a psychologist, sports psychologist, who will, by the help of different psychological skill training, will try to understand why that person is aggressive and will calm him down. Yeah, thank you, sir. The next question is, please explain stress management training or technique. Okay, how much time we have, Dr. Gangwar? Sir, still we have 5 to 7 minutes. Okay, I'll just quickly say that stress management training, we call it as also stress inoculation training. So stress management training, what we do is we try to try to make the athlete realize and understand, first of all, that he or she has a problem. She has a issue that wherein he comes under stress very frequently. Then we help him to realize and understand what is the reason, what is the cause behind it. Because we believe that unless the athlete understands and accepts the reason behind the stress, then going further is going to be very difficult. So in stress management training, we try to understand the source of the stress. Then whatever the source of the stress, we expose our athlete to that stress, kind of source again and again, and we teach him different kind of techniques, how he or should go for, he or she should go for this, managing this on completely on his own, by accepting and realizing the stressor. Yes, thank you, sir. Now the next question is what? Please explain autogenic technique. Yeah. See, autogenic technique, during this autogenic, this is not autogenic technique, it is autogenic training. So in this autogenic training, what happens? We try to, we try to relax an individual first. We try to we teach him imagery, different kinds of imagery. So first we relax, we teach them different kind of imagery techniques, and we try to link those imagery techniques specifically to his or her different sports. Then we practice it so that this can be practiced by the athlete on his own during the competition. Yeah, sir, the next question is one of our participants, Mr. Sunny Sani. He wants to know, is aggression is good or bad? Sunny Sani is also my student, I suppose. So, aggression is always bad. It is never good.
So aggressiveness is always bad, but assertive behavior, yes, it's very good. You should focus on being assertive, not on being aggressive. Thank you, sir. The next question is, it is all related to aggression actually, and the people, they ask about management technique that you have already explained. Participants, see, sir has given a very brief explanation about all the concepts, right? So we will share the PPT also, because many of the questions that in repetition. And sir, would you like to take one or two more questions? Yeah, it's okay. We can do. Sir, a very common question is there in the question answer section. What is the difference between growth and development? Like many questions are asked by the participants. So just reply that, please. You want me to explain the growth and development? Difference between growth and difference between growth and development. Okay. See, what happens, like when the moment when the child is born, if you see that, by the time the child reaches 5 years, achieves 5 years of age, attains 5 years of age, at that time, if you measure his weight, his height, his arm girth and all these things, so these things will be definitely be much more than what than that of when he was born. तो जब पैदा हुए थे, जब वो बच्चा जब पैदा हुआ था, तब से जब उसका बॉडी वेट जितना था, उसका हाइट जितना था, उनका गर्थ जितना था, ये सब में चेंजेस होंगे. तो ये जो चेंजेस हैं, ऑल दीज आर क्वांटिटेटिव चेंजेस, और इसको हम बोलते हैं ग्रोथ. तो डेवलपमेंट जो है, अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो जब एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप उसको बात करने के लिए बोलोगे, सीधा कम्युनिकेट करने के लिए बोलोगे, तब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. उनके पास ओनली 2 ही इमोशन रहता है, ओनली ए स्माइल एंड ए क्राइंग. ये रोना और हंसना, ये दोनों इमोशन रहता है. बट आगे चल के वो जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, माँ बाप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे लोगों को पहचानना शुरू करते हैं, फिर उनका नाम याद रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे मतलब खड़ा होना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर डेवलपमेंट. So growth, development continues, but growth after a particular stage, your growth stops. Okay, so the quantitative aspect is called as growth, the qualitative aspect is called as development. Yeah, so thank you so much, sir, for replying all the answers. You can see in the chat box, many participants, they have given positive feedback. Like many things got clear, and a lot of new concept also they got after your lecture. So thank you so much, sir. Participants, yes, we understand like there are few questions still pending. We cannot take because of time limitation, but definitely we'll find out some way to reply those questions. So once again, on behalf of Ministry of Education, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Sport Authority of India, Hello India, and the entire organizing team of Sai LNCP Thiruvananthapuram, and on behalf of our principal, I, Dr. Narendra Gangwar, extend my heartiest thanks to Dr. Ashtavacharya, my colleague, my senior during LNI days as well, and now we are faculty together in Sai LNCP, and we are together coordinating this event, E-Khel Pathshala PM Community Coaching Program. Sir, thank you so much for delivering such a informative and wonderful session. And we, like participants, many they want to have more discussion, so we can understand the value of this session. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Narendra. Thank you so much. Thank you all the participants for joining today's second session, and it is all because of you. The program is going to be successful because of you, because when there's no learner, then there's no need and requirement of teachers, right? So please be attentive in remaining sessions. The course will be closed on 30th of August, and tomorrow we will have the next session on 16th. Yes, so we'll have the next session on 16th, Saturday, Sunday, and there will be no session. And Monday, as we have 15th August, so we will not have session. Please take note, we'll have next session on 16th, right?
So don't get confused, because this month lot of holidays are there, and then we have to do a lot of rescheduling. So please take note. You will get communication through SMS. You will get communication through registered email also. But please take note. The next session of this program will be on 16th August. Same time, morning session will start at 11 a.m. and afternoon session will start at 3 p.m. So thank you once again, everyone. Please take part in ongoing polls and provide your valuable feedback. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.